Hello everyone, welcome back to our lecture series of ring theory. We have discussed the concept of rings, integral domains, field and ideals so far. In this lecture we are going to discuss a very significant theorem of ring, that is first isomorphism theorem, and in the subsequent videos we are going to have the second and third isomorphism theorem as well. आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को डिस्कस करते समय वी विल फाइंड कि रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय और रिंग्स के एप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई करते समय दीज फर्स्ट सेकंड थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम और इसकी हेल्प से जो भी हम अदर स्टेटमेंट्स को जनरेट करेंगे वो कितनी हेल्पफुल है. ओके, सो आइसोमॉर्फिज्म को समझने के लिए वी नीड टू क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ कर्नल ऑफ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म. ओके, और हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा ही है दैट एवरी कर्नल इज एन आइडियल ऑफ द रिंग. इसी लेक्चर में हम ये भी देखेंगे किस तरीके से हर एक आइडियल एक कर्नल को डिसाइड करती है. ओके, सो लेट अस गोइंग टू हैव द लेक्चर एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट if we look at the content. Okay, so let us start this lecture by writing the statement of first isomorphism theorem for rings. So we are going to have the theorem 15.3 and it will tell us about the first isomorphism theorem for rings. So let us look at this statement. Let phi be a ring homomorphism from R to S, where of course R and S are rings. Okay, then the mapping from R by kernel of phi to phi of R, that is the range of phi given by R plus kernel of phi is going on phi of R. This is the definition of the function from R upon kernel of phi to phi R is an isomorphism. And if we talk about the particular case, then in particular symbol R by kernel of phi is isomorphic to phi of R. अगर किन्हीं भी दो स्ट्रिंग में कोई आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है तो वी विल यूज दिस नोटेशन जो हमें बताता है दैट दिस रिंग एंड दिस रिंग बोथ आर आइसोमॉर्फिज्म. ओके, नाउ लेट अस गोइंग टू हैव द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दीज मैपिंग्स एंड दिस आइसोमॉर्फिज्म. ओके, सो वी आर गोइंग टू राइट द प्रूफ. So for the proof we are supposing that let R and S be two rings phi defined from R to S be a ring homomorphism ओके, अब इस फाई की हेल्प से वी आर गोइंग टू हैव अ मैपिंग फ्रॉम आर बाय कर्नल ऑफ फाई टू फाई आर. ओके, एंड ऑल्सो वी नो दैट फॉर एवरी रिंग होमोमॉर्फिज्म कर्नल ऑफ फाई हम कैसे डिफाइन करते हैं. कर्नल ऑफ फाई
ये ऐसा सेट है जिसके अंदर रिंग के वो सारे एलिमेंट है आर जिनकी फाई इमेज जीरो पर मैप हो रही है. ओके, दिस जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस रिंग एस. ओके, so phi of r is equal to 0. So this is the kernel of phi. Now हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ किया ही था दैट कर्नल ऑफ फाई इज आइडियल और इज एन आइडियल ऑफ आर. और जब हमारे पास आइडियल है तो हम आर बाई आई के बारे में सोच सकते हैं. ओके, एंड वी नो दैट द कर्नल ऑफ फाई इज एन आइडियल ऑफ the ring R. Okay, so this is what we are having right now. Now हमने ये शो करना है कि there exists a mapping from R upon kernel of phi to phi R. Okay, and we know that how we can decide this phi r. Okay, so this particularly this phi r represent the range of this phi function. Okay, और हमें पता है कि जब भी हम range में function define कर रहे हैं so then this phi becomes the onto function from r to phi r. Okay, so let us going to have this one also. So let f be mapping from R by kernel of phi to phi r defined as f of, इसमें किस तरीके के एलिमेंट आएंगे r प्लस कर्नल ऑफ phi. सो वी आर हैविंग r प्लस कर्नल ऑफ फाई एंड इसकी मैपिंग कहाँ जा रही है फाई ऑफ आर में. तो यहाँ पर एलिमेंट किस तरीके के मिलेंगे फाई ऑफ आर काइंड के, क्योंकि दिस आर इज एन एलिमेंट ऑफ आर. फॉर ऑल R belongs to the ring R. Okay, so this is what we are having the mapping F और हम इसी F mapping को isomorphism proof करने वाले. Okay, but before going to the proof let me write कि ये scenario हमारे पास किस तरीके से. Okay, so let this is our ring R. Okay, and somewhere this is our ring S and we are having a mapping from R to S और ये जो मैपिंग है दिस इज आर फाई मैपिंग. ओके, जब फाई मैपिंग है तो इसका हम कर्नल भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हमने ये शो किया ये दैट कर्नल इज अ सब रिंग और more precisely an ideal of this ring R. Okay, so I can say कि somewhere here we are having the kernel of phi. Okay, now we are having r and kernel of phi. तो हमने r plus kernel of phi इस तरीके के एलिमेंट्स को देखा है. Okay, so let this set this represent the r upon kernel of phi and क्योंकि s में ही हम इस फाई की सारे r के लिए इमेजेस आइडेंटिफाई करेंगे और सपोज दैट फाई इज नॉट काइंड ऑफ ऑन टू फंक्शन तो हमने इसको सपोज कर लिया दिस इज आर फाई ऑफ आर. सो फ्रॉम आर टू फाई ऑफ आर वी हैव अ ऑन टू फंक्शन. ओके, and now we are defining a function from this r of kernel of phi to phi r. Okay, so we are going to have a function like from this to this. Okay, and this mapping is f. Okay, so we are having r to s then kernel of phi and then r upon kernel of phi और इस वाले सेट से we are having a mapping from r by kernel of phi to phi of r. Okay, तो ये हमारे पास सिनेरियो है. अब हमने ये जो मैपिंग डिफाइन की है सबसे पहले हम ये शो करेंगे कि ये मैपिंग वेल डिफाइंड है, फिर हम इसे 1-1 प्रूफ करेंगे, फिर ऑन टू और फिर हम शो करेंगे कि ये मैपिंग f एक होमोमॉर्फिज्म है, रिंग होमोमॉर्फिज्म. ओके, एंड द मोमेंट वी आर एबल टू प्रूव दैट दिस f मैपिंग इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म तो इसका सेंस ये हुआ कि r by kernel of phi is isomorphic to phi of r और इसके और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है वो हम जो अपकमिंग थ्योरम्स है उनमें देखेंगे ही. Okay, so let us start this discussion. So we are having first that f
is well defined. Okay, हाउ वी कैन प्रूव वेल डिफाइन? हम कैसे प्रूव करते हैं? हम कोई भी दो एलिमेंट चूज करते हैं और उनकी एफ इमेज भी सेम है, ऐसा हमने शो करना है. ठीक है, सो लेट x प्लस कर्नल ऑफ फाई एंड y प्लस कर्नल ऑफ फाई आर एलिमेंट फ्रॉम r अपॉन कर्नल ऑफ फाई. ठीक है, अब जैसे ही हमने r अपॉन कर्नल ऑफ फाई से एलिमेंट चूज किया, इसका मतलब हम इनकी f इमेज आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, और f इमेज कहाँ जाएगी? इस फाई ऑफ r सेट में, राइट? सो लेट अस राइट देन x प्लस कर्नल ऑफ फाई विल बी इक्वल्स टू y प्लस कर्नल ऑफ फाई, राइट? और हमें पता है कर्नल ऑफ आई इज एन आइडियल, और किसी भी आइडियल के लिए इफ वी आर हैविंग दिस रिलेशन, लाइक if we are having a plus I is equals to b plus I, then this is if and only if a minus b is in I. Okay, so this is what we are having, a property of ideal. Now from this we can say that this implies x minus y is an element of कर्नल ऑफ फाई. अब हमें पता है कर्नल ऑफ फाई में किस तरीके के एलिमेंट है, जिनकी फाई में से जीरो पर मैप हो रही हो, राइट? एंड दिस इंप्लाइज दैट फाई ऑफ x minus y is going to be 0, right? Now we know that this phi is a ring homomorphism, right? So we can write this is same as phi of x plus minus y is equal to 0, and this will implies that phi of x plus phi of minus y is equals to 0. ये हम क्यों लिख पा रहे हैं? Since phi is a ring homomorphism, right? And from this we can say this is implying phi of x minus phi of y is equals to 0, and this is implying that phi of x is equal to phi of y. Now what is phi of x? Can we write this phi of x is the f image of x plus kernel of phi, and what is phi of y? This is the f image of y plus kernel of phi. तो हमने x plus kernel of phi और y plus kernel of phi इन दोनों एलिमेंट्स को इक्वल किया था, और वहां से we are able to prove that इनकी f images भी इक्वल ही है. Okay, thus f is well defined mapping. Okay, now the next step is to prove f is 1 1. So we are having the second one, that f is 1 2 1, right? अब 1 1 के लिए वी नो कि जब भी हम वेल डिफाइन की जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसका जस्ट हमें रिवर्स ही फॉलो करना है. ओके, सो लेट f of x plus kernel of phi is equals to f of y plus kernel of phi. हमने मैपिंग्स को इक्वल लिया और हम प्रूव करेंगे कि ये मैपिंग जिन एलिमेंट्स के लिए हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए. ओके, एंड दिस विल implies that phi of x is equal to phi of y, and this will implies that I am writing directly that phi of x minus y is equal to 0. Now if phi of x minus y is equal to 0, इसका मतलब ये x minus y हमारे कर्नल के एलिमेंट्स है, राइट? क्योंकि जो एलिमेंट की इमेज फाई में 0 पर जा रही है वो सभी कर्नल के मेंबर है. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? x minus y is a member of कर्नल of phi, and this will implies, हमने अभी जस्ट लिखा ही था कि x minus y belongs to kernel of phi if and only if x plus kernel of phi is equal to y plus kernel of phi. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x plus kernel of phi is equals to y plus kernel of phi, right? So हमने फंक्शन के f इन पॉइंट्स के f इमेजेस को इक्वल लेके हम चले थे और हम प्रूफ कर पा रहे हैं दैट ये जो पॉइंट्स हैं वो भी सेम ही है. Okay, which implies that f is 1 2
1, राइट. नाउ कम टू द थर्ड, और यहाँ पर हम प्रूफ करने वाले हैं ऑन टू f is ऑन टू, राइट. और ऑन टू प्रूफ करना आसान ही है क्योंकि फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है वो फाई ऑफ आर में डिफाइन किया. ओके, सो लेट फाई ऑफ x belongs to phi of r be any element. ओके, phi of r का हमने कोई भी एलिमेंट चूज कर लिया. नाउ विद द मोमेंट वी आर फिक्सिंग दिस x, obviously where x belongs to r. तो जैसे ही हमने कहा that this x is an element of this ring r, इसका मतलब phi of x तो phi of r में ही जाना चाहिए. बट जैसे ही हमारे पास x एलिमेंट आया, then we can define the element from r upon kernel of phi. Then we can identify an element x plus kernel of phi in r upon kernel of phi such that we are having this scenario that f of x plus kernel of phi is equals to phi of x. So for every member from phi of r, we are having a preimage that is x plus phi of r. That is, every element of phi of r having a preimage in r upon kernel of phi, which implying that f is onto, right. Now the next step is for the ring homomorphism. So the fourth one is f is ring homomorphism. Okay, अब रिंग होमोमॉर्फिज्म तो प्रूफ करना आसान ही है. सो लेट first of all we are going to prove that the addition operation is preserved. Okay, so what we can say that suppose f of x plus kernel of phi and plus y plus kernel of phi, we are having the f image of addition of these two elements, and obviously this is equals to f of x plus y plus kernel of phi, and this will be equals to, क्योंकि हमने x की x plus kernel of phi की इमेज f of x ही लिखी है, तो यहाँ पर this will be equals to f of x plus phi of x plus y. Okay, phi of x plus y, and again phi of x plus y will be equals to phi of x plus phi of y, right, since phi is ring homomorphism. Okay, now this will be equals to phi of x क्या है, this is the f image of x plus kernel of phi, or phi of y, that is the f image of y plus kernel of phi, right. So this shows that f preserved the addition operation. Okay, that is f preserves the addition operation. Okay, now come to the next part, वहां पर हम प्रूव करेंगे preservance of multiplication operation. Okay, so we are having f x plus kernel of phi time y plus kernel of phi, that is equals to f of x y plus kernel of phi, right. And obviously f of x plus y f of x y plus kernel of phi is same as phi of x y, and obviously phi is ring homomorphism, so we can write phi of x time phi of y. Now what is phi of x? This is the f image of x plus kernel of phi, and phi of y is f image of y plus kernel of phi. Okay,
that is F preserves the multiplication operation. Okay, and which show that F is a ring homomorphism, और अब हमने प्रूफ कर दिया है कि F is a 1-1 onto ring homomorphism, तो F will be an isomorphism. Okay, so thus from 1 to 4 we can conclude that F is a ring isomorphism from R by kernel of phi to phi R, and hence we are having this beautiful relation, that is R upon kernel of phi is isomorphic to phi of R, and this is very important conclusion, और यही है हमारा first isomorphism theorem. Okay, so let me write. Okay, this is our first आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग. अब ये हमें बता क्या रहा है कि जब भी हमारे पास एक रिंग R है और एक मैपिंग फाई है विच इज द रिंग होमोमॉर्फिज्म, तो उस रिंग होमोमॉर्फिज्म की हेल्प से we can have a structure R upon kernel of phi which is isomorphic to the image of R. Okay.